हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 8 हाउ थिंग्स आर मेड। ठीक है, अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है सो फर्स्ट गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द फर्स्ट इज एक्टिविटी 1, मेक रिसाइकिल्ड पेपर। हमें रिसाइकिल्ड पेपर बनाना है। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट यू नीड, सो आपको कुछ मटेरियल चाहिए। सो यू नीड ओल्ड न्यूज़पेपर, सम फेनुग्रीक सीड, मेथी के दाने एंड वाटर। ठीक है, एंड यू नीड अ ट्रे ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ आपको क्या करना है, you have to take this old newspaper and soak it in water for overnight। आपको पूरी रात के लिए इसे पानी में डालकर छोड़ देना है। ठीक है, आप इसे पीसेस में कट कर कर आप पानी में डालकर ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दो। नेक्स्ट डे व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हो एंड जस्ट मिक्स इट। ठीक है, आपको इसे पूरा मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, सो दैट ऑल द newspaper, the paper, ना they get turned into a pulp जैसा वो बन जाए। ठीक है, you mash it। so if you don't have a mixer grinder, नहीं है आपके पास, तो आप हाथ से भी उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो, so वो एक पल्प जैसा बन जाए ना, बिल्कुल मैश हो जाए। और you can use any other tool so that it can just mash it properly। आपको बस उसे बहुत अच्छे से मैश करना है। Now you have to spread this pulp, आपके पास आ गया ना। Now spread this pulp on a tray। आप इस तरह का ट्रे आप ले सकते हो। ठीक है, एंड spread it on this tray, और बहुत पतले शीट में आपको ऐसे बना देना है। ठीक है, now put it in the sunlight so that it can dry। आप इसे सनलाइट में रख दो so that it will dry। Now once it is dried, your recycled paper is ready। ठीक है, अब ये जब सूख जाएगा, your handmade paper, the recycled paper is ready। So now you can make anything out of this paper। आप इसका ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, आप इसका कुछ फ्लावर बना सकते हो, या फिर फेस मास्क, एनीथिंग यू कैन मेक। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2, कलर एंड डिजाइन द पेपर यू मेड। सो जो आपने पेपर बनाया ना, you can color it। Either you can use natural colors or artificial color। Okay, so you can color the paper and you can make any design you like। ठीक है, next natural color experiment, cut the recycled paper into pieces of same size। so आपने जो recycled paper बनाया ना, so cut it into pieces of the same size। ठीक है, आप same size में उसे कट कर लो। color them using natural ingredients mentioned in the table below। so suppose आपने 5-6 pieces कट कर लिया। ठीक है, and now you have to color it। color कैसे करना है, using the natural ingredients। so here are some natural ingredients given। ठीक है, make sure that the quantity of ingredient used is the same for coloring each piece of a paper। so जो भी आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो ना, आप मेक श्योर करो कि जितना क्वांटिटी आप एक पेपर के लिए यूज कर रहे हो, सेम क्वांटिटी ऑफ कलर आप दूसरे पेपर के लिए भी यूज करो। ठीक है, सो हियर आर द नेचुरल इंग्रेडिएंट which you have to use to color the paper। so what is this, turmeric, so haldi। so आपको हल्दी लेना है। ठीक है, mix it in water so it will become a paste। okay, and now apply this color on your paper, recycled paper जो आपने पेपर बनाया ना, so apply this color। so when you apply this color, let it dry। now observe the color, what type of a color you got। ठीक है, कलर बहुत ब्राइट है या फिर डल है ना। so when you apply the turmeric color, वो सूखने के बाद it will give you a yellow color ना, and the color looks little dull। it's not very bright, it's little dull, but it's a natural color। spinach, so आपको spinach लेना है, and spinach के leaves, पालक के पत्ते, and
extract its juice. इसका जूस थोड़ा निकाल लो, ठीक है. You will get a green color. Now with this green color, color your recycled paper. अपने पेपर को कलर कर दो. Now you will get a green bright color and let it dry. You will get a very green bright color. Then beetroot. So आप beetroot का भी आप उसका थोड़ा जूस निकाल लो. It will give you a dark pink reddish color, ठीक है. And when you apply it on the recycled paper, it gives you a very bright color, ठीक है. Henna, mehendi. So that mehendi also you can just make a paste, okay, and apply it on the paper. It will give you a brown color. And the color is not very bright, it little dull, ठीक है. So you can have some more colors. आप और भी colors बना सकते हो using different uh, flowers ना, different flowers का use करके और भी आप different colors आप बना सकते हो. And you can just try it out how it turned out on the recycle paper पे वो कैसा दिखता है. Okay. Now next question is activity 3. Make a greeting card, a paper mask or any such item made of recycled paper. So आपने जो recycled paper बनाया, आपने उसे color भी कर दिया, right? Now you can make some greeting card. आप greeting card बना सकते हो, or you can make a paper mask. आप paper mask बना सकते हो, okay? With that recycled paper, ठीक है. And you have to tell the whole class आपने कैसा बनाया. You can have an exhibition ना, how everyone made how they have used their recycled paper. अपना recycled paper को वो कैसे use किए. So I made a greeting card using recycled paper. I decorated it with dried leaves, flowers and natural colors. So आप सूखे पत्ते का यूज कर सकते हो ना, ड्राइड फ्लावर्स का यूज कर सकते हो ना, टू डेकोरेट योर ग्रीटिंग कार्ड. It looked beautiful and helped save paper. So if you are using recycled paper, आप क्या कर रहे हो, आप environment को save कर रहे हो, right? Next question. Do you think that we waste paper? क्या आपको लगता है कि हम paper waste करते हैं? So sometimes क्या होता है कि unknowingly हम paper waste कर देते हैं ना. So yes, we often waste paper by throwing away notebooks. कभी-कभी notebooks फेंक देते हैं या फिर tearing pages unnecessarily ना. Pages आप tear करते हो unnecessarily ना, to make aeroplane or something like that. So this way a lot of a paper get wasted. And using fresh paper when old paper can still be used. कई बार ऐसा होता है कि हम नए पेपर ले लेते हैं ना कुछ राइटिंग के लिए, and still there are pages left in the old notebooks. में कुछ pages हैं but still sometimes क्या होता है कि आप उसे छोड़ देते हो and you buy a new notebook. So don't do that, try to save paper, ठीक है. Okay, next question. How can we reduce wastage of paper? So हम कैसे wastage of paper को reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. So you can write on both side of the paper. आप paper के दोनों side लिखो. Reuse old notebooks. So अगर आपके कुछ notebooks में कुछ paper left है, pages left है, so try to use that paper. रिसाइकिल न्यूज़पेपर्स ना, आप पेपर्स को जहाँ रिसाइकल्स होते हैं ना आप वहाँ पे दे सकते हो. अवॉइड अननेसेसरी प्रिंटिंग ना. मेनी टाइम्स क्या होता है हमारे घर प्रिंटर होता है तो हम काफ़ी चीज़ें ऐसे प्रिंट आउट ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. सो अवॉइड दैट. यूज़ डिजिटल नोट्स वेन एवर पॉसिबल. सो जितना हो सके आप पेपर का कम यूज़ करो ना. आप देखो कि सब कुछ अभी ऑनलाइन हो चुका है तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन डिजिटल. हाँ, डिजिटली आप लिख सकते हो whenever it is possible. So this way we can reduce the wastage of paper. So अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो please subscribe to the channel. I upload all the chapter with the explanation and the question answer so you don't miss it. Okay. So moving to the next question. Activity 4. Different types of paper and their uses. So आप देखो कि observe the different types of a paper that we use in our daily life. So आप देखो कि paper को हम कई जगह पे use करते हैं, right? And there are different types such as writing paper we have newspaper, we have art paper, we have cardboard.
right? And we have the tissue paper ना, ये all these are made from the paper, ये सभी कुछ paper से बनते हैं, right? So we use it for different purpose. So paste small pieces of the different types of a paper in the space given below and write their uses. So आप देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है. So writing paper. So आपको एक छोटा सा पीस कट कर कर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है? And you have to write the uses. So where we use the writing paper? So writing in the notebooks. हम अपने notes बनाने के लिए use करते हैं, right? Newspaper. So cut a small piece of a newspaper and paste it here. आपको यहाँ पे paste कर देना है, ठीक है? And where it is used for reading news, right? Art paper. So again, cut a small piece of art paper and paste it here. Where it is used for drawing and painting के लिए हम use करते हैं, right? Tissue paper. So tissue paper, cut it and paste it here. Tissue paper is used for cleaning hands and face ना, face को, हाथ को ना साफ करने के लिए use करते हैं tissue paper. Cardboard. So where the cardboard is used, it is used for making boxes and packaging goods. ना हम packing के लिए use करते हैं ना cardboard को और boxes बनाते हैं उससे. So these are the different uses of the different types of a paper. Next, activity 5. Discuss the following situation with your classmate and write down which of the 5 R's it belongs to. हमने 5 R पढ़ा था ना? Reuse, refuse, reduce, repurpose, recycle. These are the 5 R. So यहाँ पे कुछ situations दिए गए हैं and you have to identify ये इनमें से कौन सा R है. Okay, so which R it represent? Okay, so the first is a family brings their own cloth bags to the grocery store instead of using plastic ones. So एक family जो grocery store जाती है सामान खरीदने के लिए वो क्या कर रहे हैं वो अपना cloth bag लेकर जा रहे हैं, right? So that they can avoid the plastic bags. वो plastic bags को avoid कर सके. So which are it represent? So it is reuse. ठीक है, so they are using the cloth bags and the cloth bag can be used again and again. आप multiple times आप use कर सकते हो cloth bag को, right? So it is reuse. Maya does not use a plastic straw to drink coconut water. अब देखो जब हम नारियल पानी पीते हैं ना तो the vendor gives you a plastic straw. So Maya refuse कर रही है. Okay, she will not use the plastic straw. So which are it represent? So it is refuse. ना? She is refusing it. So आप सोचोगे how she will drink the coconut water. So she can put it in a glass. ठीक है, she can put it in a glass or you can carry your own stainless steel straw भी आते हैं. So you can use that also. You can carry जब भी आपको लगता है कि आप coconut water पीने जा रहे हो. So you can carry your own straw. Okay. Next, Rohan uses blank pages of his old notebooks to avoid wastage of paper. So, रोहन क्या कर रहा है आप देखो जब हम अभी नेक्स्ट ग्रेड में आप मूव करोगे तो आपके बहुत सारे नोटबुक्स में कुछ लेफ्ट ओवर पेजेस होंगे सो रोहन इज यूजिंग दोज लेफ्ट ओवर पेजेस ओके टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ पेपर सो रोहन इज रिड्यूसिंग द वेस्ट राइट वो रिड्यूस कर रहा है राइट instead of buying a new notebook he is using a old ones so he is reducing it. Next, Sarah gives her old books to younger students of their use for their use. So सारा क्या करती है अपनी जो पुरानी किताब होते हैं ना अपनी जूनियर्स को अपने यंगर स्टूडेंट्स को वो दे रही है for their use. ठीक है? So what she is doing? She is reusing, right? So other students will again read from the same book. ठीक है? So this is reuse. Kabir paints an old bottle to use as a flower vase. So कबीर क्या कर रहा है कबीर इज पेंटिंग एन ओल्ड बॉटल को वो पेंट करके एक फ्लावर वास की तरह यूज करेगा घर में ठीक है सो व्हाट ही इज डूइंग ही इट इज रीपर्पस ना हम एक चीज को अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं लाइक यू कैन मेक
paper bags from the newspaper. So this is also repurpose. Priya cuts old clothes to make a fun bag for carrying her books. So प्रिया क्या कर रही है, अपने पुराने कपड़े का यूज करके वो एक बैग बना रही है, फन बैग for carrying her books. So again this is an example of repurpose ना. वो ओल्ड जो यूज करने लायक कपड़े नहीं है ना, so she is making the use of those old clothes in an another way. This is repurpose. Next, a shopkeeper turns old newspaper into paper envelope. ना अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर ओल्ड न्यूज़पेपर को पेपर इन्वेलप की तरह यूज कर रहे हैं, राइट. सो अगेन दिस इन्वेलप कैन बी यूज्ड, सो दिस इज रिसाइकल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू कैन ट्राई आउट these. You can use your creativity to make something out of the waste paper. ठीक है. ओल्ड न्यूज़पेपर का आप यूज करके आप ये सब बना सकते हो. Reflect. So the first question, what are some objects that you can make using paper pulp? So आपको कुछ ऐसे objects बताने हैं जो आप paper pulp से बना सकते हो. So paper pulp is the one, आपने पेपर को पीसेस में कट करके वाटर में सोक किया था ना, एंड देन यू हैव मिक्स्ड इट वेरी वेल, you have got the paper pulp. आपको paper pulp मिला था, right? So from this paper pulp you have made a recycled paper. आपने एक पेपर बनाया. So you can make many other object using this paper pulp. आप इस paper pulp को जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस शेप में आप डालोगे, it will take that shape. ठीक है. So you can make a lot of object using this paper pulp. ठीक है. हमने recycled paper बनाया. You can make many other objects. For example, you can make paper bowl. So if you have something like shape of a paper bowl, आप उस shape में अगर इस paper pulp को डालोगे ना, it will take the shape of the bowl. वो bowl का shape ले लेगा. Like that you can make pen holders. आप ठीक है. So आप इस पेपर पल्प को जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हो ना, आप यू कैन मेक दैट. यू कैन मेक पेन होल्डर्स, पेपर बाउल्स, फ्लावर पॉट्स एंड मेनी मोर डेकोरेटिव आइटम्स यू कैन मेक फ्रॉम दिस पेपर पल्प. ठीक है. यू कैन मेक फोटो फ्रेम्स, गिफ्ट टैग्स. देन आप सिंपल रिसाइकल पेपर आप बना सकते हो, एंड फ्रॉम दैट रिसाइकल पेपर यू कैन मेक ग्रीटिंग कार्ड्स, पेपर मास्क and many more things you can make. So you have to use your own creativity. ठीक है. Next question. Write down one step you can take for each of the 5R. So हमने 5R पढ़ा ना, तो on your individual level आप अपने लेवल पे 5R को कैसे यूज करोगे. ठीक है. सो यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. ठीक है. आप इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या करोगे. रिफ्यूज के लिए आप क्या करोगे. आई विल रिफ्यूज सिंगल पेपर कप्स. जहां कहीं भी आपको देखो सिंगल पेपर यूज ना मिल रहे हैं ना, सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर सिंगल यूज पेपर कप्स, यू जस्ट रिफ्यूज इट. ठीक है. Reduce. So I will write on both side of the paper and I will not waste the paper. So this way you can reduce the waste. Reuse. I will reuse old notebooks with the blank pages. हम देखो बहुत सारे पुराने नोटबुक्स होते हैं, उसमें काफी लेफ्ट ओवर पेजेस होते हैं ना, सो यू कैन यूज दैट लेफ्ट ओवर पेजेस. सो दिस इज रीयूज. ठीक है. Repurpose. So repurpose, I will make paper crafts from old newspaper. So old newspaper का use कर कर हम कुछ paper crafts बना सकते हैं, right? Recycle. I will send waste paper for recycling. So आप recycle के लिए आप जितने भी paper waste हो या फिर plastic waste या metal waste, glass waste,
all these can be recycled, so you have to just submit this in the recycle center पे आपको ये सारे कुछ submit करना होगा. This way you can recycle. Okay. Number third. Discuss the changes you can bring in your daily life by using 5 hours rule to avoid wastage of paper. So आप देखो कि डेली लाइफ में आप क्या चेंजेस लाओगे ना by using this 5 hour so that you can avoid the wastage of paper. ठीक है. Complete the table with your ideas for creating these changes. So आप डेली लाइफ में आप how you will avoid the wastage of paper. Okay, so for example refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle को आप कैसे यूज कर कर वेस्टेज ऑफ पेपर को रिड्यूस कर सकते हो. So refuse, say no to unnecessary paper pamphlets. हाँ, आप रोड पे जाओगे तो काफी लोग पेपर पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, सो जस्ट डोंट टेक. Reduce. Use both side of every notebook pages. आप कभी भी कोई नोटबुक डिस्कार्ड करने के पहले मेक श्योर दैट देर इज नो पेजेस लेफ्ट. ठीक है. यू हैव यूज्ड एवरी सिंगल पेज. आपने हर पेज को अच्छे से यूज किया है, देन यू जस्ट डिस्कार्ड इट. ठीक है. दैट दिस वे यू रिड्यूस द वेस्ट. रीयूज. कवर बुक्स विथ ओल्ड न्यूज़पेपर. सो आप देखो हम अपने बुक्स को नोटबुक्स को कवर करते हैं, सो यू कैन जस्ट यूज द ओल्ड न्यूज़पेपर को यूज कर कर आप अपने बुक्स को कवर कर सकते हो. दिस वे यू आर रीयूजिंग द थिंग्स, राइट. रीपर्पस. मेक पेपर बैग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. सो आप पेपर बैग्स बना सकते हो फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर्स. Recycle, give old newspaper to recycling. ठीक है. आप न्यूज़पेपर ओल्ड न्यूज़पेपर को इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन द गार्बेज यू कैन जस्ट गिव इट टू द रिसाइकलिंग सेंटर्स. ओके. So this way you can recycle and reduce the waste. So with this we have completed all the question answer of this chapter. But अगर still आपको कुछ doubt है you can ask in the comment section. और वीडियो अच्छा लगा हो तो please subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye. Take care.